कल हम लोग कहाँ पे रुक गए थे निक्की बताओ। कल हम लोग क्वेश्चन रीड कर लिया था, अभी उसका आंसर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का जो क्वेश्चन था वो था इवैल्यूएट बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क को हम लोग जब इवैल्यूएट करने गए थे तो हमें ये पता चला कि सबसे बड़ा रिस्क ये है कि सिर्फ ये ब्रांड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हैमर ब्रांड के ऊपर, जो कि दिक्कत हो सकता है। Yani the group success is based on the Hammer brand, and any damage to the brand could have implications for the group maintaining the competitive advantage. So उसके competitive advantage पे उसका negative impact पड़ सकता है. The investigation into the excessive fees charged by the Hammer could affect the reputation. जो excessive fees charge किया गया है, अगर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा आया तो उसके ब्रांड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और इससे क्या होगा, कस्टमर विल गो टू द अल्टरनेटिव स्टोर्स एंड देयरफॉर डैमेजिंग द मार्केट शेयर, इससे अपना मार्केट शेयर भी कम हो जाएगा। इन एडिशन दैट एक ग्रुप जो है बहुत पैसे एडवर्टीजमेंट पे लगा चुका है ताकि वो ब्रांड को प्रमोट कर सके। इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ब्रांड का थोड़ा भी खराब होगा तो उसके सारे पैसे ड्रेन्ड हो जाएंगे, यानी कि सारे पैसे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, बिजनेस रिस्क है इस सवाल का। दूसरा है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में क्या बोल रहा था कि हार्डवेयर जो हम लोग का एक हार्डवेयर स्टोर है, रिलायबिलिटी ऑन ब्रांड टू मच। दूसरा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अब इसमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में इन्वायरमेंट, सॉरी नॉट एन वन, कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट। So the hardware store industry is highly competitive, and as illustrated by the price war between the competitors and the millet company indicated by the sales promotions offered by the group. The risk of losing customer to the to competitor in these strategy is not successful. Further, aggressive pricing strategy will put pressure on the profit margin and the cash inflows. तो यहाँ पे एक छोटा सा बात क्या बोला कि अगर अग्रेसिव प्राइसिंग पॉलिसी अगर हम यूज करें तो हमको क्या होगा, निगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, इसके ऊपर कैश फ्लो के ऊपर हो जाएगा निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो। सेकंड हमारा के प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। और साथ में इससे रेशियो अगर गिरेगा तो हमारा द करंट रेशियो फॉलन फ्रॉम 1.4 to 1 विच मे बी ड्यू टू द लोअर कैश बैलेंस। तो अभी जो हमारा कैश जो यूज हो चुका है इम्प्रूवमेंट, वो जो हैवी स्पेंडिंग हुआ उसके कारण, और हमारा करंट रेशियो भी ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, हमारा करंट रेशियो 1.4 से रिड्यूस होके 1.1 पे आ गया। तो ये भी एक रिस्क ही है। दूसरा एक्सटेंशन एंड इनोवेशन। एक्सटेंशन एंड इनोवेशन भी हमारे लिए फिलहाल क्या है, एक रिस्क की तरह हम देख रहे हैं एज अ बिजनेस रिस्क। बोला है कि देयर इज अ लार्ज इन्वेस्टमेंट फॉर द ग्रुप which is approximately 144 being on the 144 million being spent on the progress. Pehla, there is a risk that that is not an adequate there is a risk that there is not an there is a risk that there is not an adequate return on investment if the destination store strategically is not successful. In addition, the 5 store is being closed any at one time. There will be a significant loss of revenue and cash inflow. There will be danger that the customer having used the alternative hardware stores while the hammer still assets come to like one of their competitors do not return once they रिनोवेटेड स्टोर्स आर रीओपन। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क वो है कि पहले तो पैसे उससे एडुकेट आरओआई नहीं अगर रन हुआ तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपका 5 स्टोर एट ए टाइम बंद रहेगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा रेवेन्यू तो बंद होगा ही, उसके बाद हमारा कस्टमर जो है शिफ्ट होने लगेगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है कि लैडर को अगर हम एक्वायर कर रहे हैं, एक्विजिशन,
The acquisition of foreign subsidiary represent a significant investment by a group, and there is a risk of business falling and the group losing some or all of the financial investment. There is an operational problem in terms of the global exercising group exercising its control. The government of Ireland owns 35%, and it may be that the government attempt to use its shareholding and the significant influence to interfere with the government with the group plan of the company, and such political interference could affect the return on investment and group strategy for international. So there would be this would be made worse if the political instability or economic problem arise in the parliament. तो यहाँ पर चूंकि गवर्नमेंट की 35 है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो ग्रुप के प्लान में वो इंटरफेयर कर सकता है, वो एक काफी बड़ा रिस्क है. एंड एज दिस इज first overseas investment, the management of the group may lack of the necessary knowledge and expertise to operate a foreign subsidiary in line with the local regulation. तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि ये हमारा चूंकि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, तो मैनेजमेंट को क्या होगा कि ने लैक यानी उनके पास एक शॉर्टेज हो सकता है, दे कैन लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है. तो हम अगर पूरे डिस्कशन को समराइज करें तो सबसे बड़ा, हाँ नहीं देंगे उसको नया चीज. इसको साफ करके दो. तो पहला क्या हो रहा है कि हम अब अपने पूरे डिस्कशंस को अगर थोड़ा समराइज करने चाहें तो क्या क्या हम बेसिकली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो हम इसको एक बार फिर से ये करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास ये है ब्रांड का एक्सेसिव रिलायंस ऑन द ब्रांड, पहला. दूसरा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, तीसरा जो रिस्क है हमारा एक्सटेंशन एंड रिनोवेशन. ठीक है, एक्सटेंशन एंड रिनोवेशन ये एक हमारा रिस्क है क्योंकि इसमें बहुत पैसे हमारे खर्च हो रहा है, तो ये भी हमारा एक रिस्क है. उसके बाद जो चौथा जो रिस्क है वो है एक्विजिशन ऑफ लैडर कंपनी, जो कि हमारा एक रिस्क है क्योंकि इसमें हमारे बहुत पैसे लग जाएंगे, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, लास्ट में बैंक का लोन भी हमारे लिए यहाँ पे रिस्क है. ठीक है, तो लैडर वाला तो मामला सेट हो गया कि यहाँ पे चूंकि लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे अगर थोड़ा इनस्टेबल हुआ तो पूरा का पूरा हमारा ग्रुप आरवाई खराब हो जाएगा. सेकेंड, हम कोई चीज़ ये करना चाहें मतलब वहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो देखेंगे कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन हो जाएगा तो भी हमारा स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं हो पाएगा. बैंक लोन बोल रहा है सिग्निफिकेंट बैंक लोन रिप्रेजेंट 6.4% ऑफ द ग्रुप टोटल एसेट. ठीक है, विच इज टेकन आउट पार्टली फंड द 6.4% of the group total asset, which this has been taken out to partly fund an acquisition of ladder company. This would have contributed to the significant increase in the gearing ratio. इससे क्या हो गया हमारा gearing ratio वो हो गया, बढ़ गया. हाई gearing propose there is a finance risk to the group. finance risk है किसको, group को. No, especially due to the variable interest return attached to the loan. If loan rises, the group may struggle to meet the interest payment. तो चूंकि ये वेरिएबल है तो एक तो बैंक लोन है, पहला तो ये है, इससे हमारा गियरिंग रेशो बढ़ गया है. एक तो गियरिंग रेशो बढ़ गया है, दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है कि ये वेरिएबल है तो थोड़ा भी अगर रेट चेंज हुआ तो फिर देयर विल बी अ फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पे बढ़ जाएगा. क्या बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था. एंड स्पेशली द इंटरेस्ट कवर है शार्प डिक्लाइन फ्रॉम 68, जो कि गियरिंग इज हाई टू 68%, तो जो कि हमारा ऑलरेडी एक इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो जो है जो शार्पली डिक्लाइन हुआ है तो उससे हमारा रिस्क बढ़ जाता है. द बैंक कुड रिकॉल द लोन if the covenants are breached and the group is unlikely to able to repay the loan, it's entirely recalled. If the loan is entirely recalled, अगर बैंक थोड़ा भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण अगर लोन को रिकॉल कर लिया
तो कंपनी को बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। फिर बोल रहा है रेंज कंपनी लीगल क्लेम। अब ये बोल रहा है कि जनरल नोट द फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज अ हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री एंड रिप्रेजेंट द डाइवर्सिफिकेशन। In general note, the financial industry is highly regulated and represents the diversification from the groups and other retail activity, meaning that group management may be less experienced with the part of the group activity and therefore poor operationals and strategic decisions may be made in relation on it. More especially, the legal claim against the range company would have significant employer. So, the range company legal. तो बैंक लोन वालों तो एक पॉइंट बहुत अच्छा था। उसके बाद अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है वो है रेंज कंपनी लीगल क्लेम। रेंज डब्ल्यू आर रेंज डब्ल्यू आर ई एन सी एच रेंज कंपनीज का जो लीगल क्लेम है वो भी एक सबसे बड़ा यहाँ पे एक पॉइंट है। तो वो क्या है कि इन जनरल the financial industry is highly regulated and represent a diversifications from the group's other retail activities, meaning that group management may be less experienced with a part of the government activity and therefore the poor operational and strategic decision may be. Yes, especially legal claim against the range have been significant implications. The claim themselves put pressure on the cash flow and the cost of claim. यहाँ पे जो हमने क्या किया था वो एक्सेसिव जो हमने कमीशन चार्ज किए थे ये उसके बारे में बात कर रहा है। So pressure on the cash flow, the cost of claim will be determinantly affects the profits and this may be the potential claims. So yet the loss against the group. So the eventual cash and profit impact may be more than the amount of provision which is currently recognized. The financial service regulator could take the further action, example imposing a fine. तो ये भी चीज आ सकता है यहाँ पे जो हमारा लीगल क्लेम को हमने बुक्स पे लिया। तो ये सारे हमारे पास जो है वो रिस्क है। तो अगर हम उसको थोड़ा और समराइज कर दे तो सबसे पहले ब्रांड कॉम्प्रिहेंस का रिस्क है। ब्रांड वाला एक्सेसिव जो ब्रांड के ऊपर रिलायंस है वो एक रिस्क है। दूसरा है कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रिस्क है। तीसरा आपका यहाँ पे जो है एक्सटेंशन और इनोवेशन जो किया है वो भी एक रिस्क है। उसके बाद हम जो एक्विजिशन करने जा रहे हैं वॉलैंड में वो एक बड़ा रिस्क है। बैंक का लोन ले रखा है उससे हमारी गेयरिंग बढ़ चुकी है। साथ में हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारा वेरिएबल्स है जिसके कारण हमारा फाइनेंशियल और साथ में हमने ये भी देखा है कि हमारा जो कवरिंग रेशियो है वो भी हमारा खराब हो गया है। और उसके बाद रेंज कंपनी का जो क्लेम है वो भी क्लेम या प्रोविजन है वो भी इसमें एक और रिस्क ये सकता है कि जो फाइनेंस कंपनी के रेगुलेटर है वो हमें फाइन भी दे सकते हैं। अब आता है कि इवेंचुअली अब है इवैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इवैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो हमारा मटेरियल मिसस्टेटमेंट का सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मटेरियलिटी जो है ऑलरेडी हम क्वेश्चन यहाँ पे गाइड कर दिया था कि हम ये हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो मटेरियलिटी है वो हमारे रेवेन्यू के ऊपर लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है, रेवेन्यू के ऊपर लग रहा है। तो ये हमारा एक वो है, ये हमारा रेवेन्यू के ऊपर लग रहा है। तो ये हमारा मटेरियलिटी रिस्क है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो पहला है कि मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ दिस ब्रीफिंग नोट द फॉलोइंग ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल विल बी used to assess the significance of identified risk and as requested that this will be based on the revenue of the company। और ये revenue of the company के ऊपर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो अब अब आ रहा है क्या बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या है, 0 to 8% ऑफ रेवेन्यू हो सकता है जो कि 2.25 मिलियन से 4.5 मिलियन तक जाएगा। 0. So the benchmark is only a starting point of the determining the plan materiality and professional judgment। So benchmark is the only the starting point for the determining the planning materiality and professional judgment will need to be applied in determining a final level to be applied during the course of the audit। There is an exercise existing clients। So this is an exercise that we have accumulated knowledge and the experience in the Hummer company। However, the proposed restructuring and the pressure of the company profit margin is increased। तो अब इनका क्या हो गया कि चूंकि अभी इन्होंने एक्सपेंसेस बताया है तो इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेवल ऑफ pressure is increased
and level of risk in the current year. Therefore the materiality जो होगा 0.5 से ही हम the therefore the materiality has been based on 0.5% of the total revenue 2.45 millions which is and set to be 2.3 million. ठीक है, तो अभी हम ये बोल रहे हैं कि has been set at 2.3 million. अब चूंकि ये हो गया तो अब हम इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारे रिस्क बढ़ रहे हैं इस करंट ईयर में, तो हम अपने मटेरियलिटी को 0.5% तक ही रख रहे हैं। ठीक है, अब आता है कि एक्सेप्शनल आइटम एंड अनयूजुअल मूवमेंट इन द मार्जिन। तो अब हम उसको और एनालाइज करते हैं। बोले ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग मार्जिन बिफोर एक्सेप्शन हैज बीन इम्प्रूव फ्रॉम 19.4% से लेकर 21% विच इज नॉट इन लाइन विद द एक्सपेक्टिंग and this is not in line with the expectations given the group sales promotions and price war. Given the group sales promotions and the Mallet's company price war, it would be expected that the operating margin would fall as a result. So this is supported the fact there is an operating margin after the expense has been reduced from 7.5% to 7.1%. तो हमारा क्या बोल रहा है कि and this is supported by the fact that operating margin after exceptional item is reduced from 7.5 से लेके 7.2 तक हो गया. So there is an incentive for the overstatement of the operating profit before exceptional item due to there is an incentive. अब यहाँ पे क्या है कि अब उसके डायरेक्टर को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इंसेंटिव मिलता है before exceptional profit due to the incentive bonuses. It is permissible to disclose item as exceptional item which where this enhanced for the fair presentation and of the financial. However, the determination of which items are to be disclosed as exceptional is subject to the judgment and the user of the financial statement could be misled if the amount are not classified and disclosed in the transparent manner consistently with the group's accounting policy. In this situation, there is a particular risk of management bias due to the there is a risk of management bias due to the excess executive bonus being based on the profit before exceptional item. तो यहाँ पे हो सकता है कि वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए या अपने जो बोनस है उसको स्कोर करने के लिए, मतलब उसको ज़्यादा लेने के लिए वो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम ज़्यादा दिखा सकते हो. इट इज़ अ डिबेटेबल और वो क्लैरिटी लाने के लिए, मतलब यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको नोट्स ऑन अकाउंट में प्रॉपर और ट्रांसपेरेंट मैनर में देना चाहिए. सो इट इज़ अ debatable debatable whether the store enhanced cost could be presented as exceptional as there is a typically just a part of normal operating expense. It is possible that the management could choose has chosen to classify the cost as exception in order to maximize their bonus. Given the usual movement, given the unusual, there is a risk that profit is overstated. Perhaps thorough, deliberate accounting treatment such as the accelerating revenue recognition or overvaluations of the inventory. Overall, there has been a reduction of net profit margin from 6.2 to 5.3, which is this is expected, and this is unexpected given that the loan taken out during the year and associated increase in the finance cost. तो ये भी सही है, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि हमारा क्या हुआ था कि हमने जो करंट ईयर में लोन लिया था जिसके कारण हमारा लोन का कॉस्ट यानी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गया, इसलिए हमारे नेट प्रॉफिट क्या होते गिर गए. अब बोल रहा है क्रेडिट विल बी अवॉर्डेड for the recognition of the project that financial may not be corrected if the accounting policy used by the lender have been aligned to those to go for the purpose of consolidation. Capitalization of cost in relation to the renovation expense. The cost of program is material. The cost of program is material to the group, and while the totaling cost is 144 million, generally exceeding the materiality threshold 2.4 million, and there is a risk that capital expenditure and revenue expenditure may be misallocated, loading to over and understatement of the property, plant and equipment and the profit. Renovation cost would include such as the decorating, which would be expense, while acquiring a land, creating car parks, including building extension work, including involve construction of new asset, and those would be capitalized. It is possible that the management may misclassify operating cost as a capital in nature to increase the reported profit. And once the stores are ready to use, the asset has been capitalized should be depreciated over the estimated life. यानी जो भी एसेट हमने लगा दिया था उसको अब हमको डेप्रिशिएट करना चाहिए ओवर द यूजफुल लाइफ, and which so many different type of the asset being capitalized
there is a risk that their individual life is not appropriately determined, meaning that the asset could be over or under depreciated, leading to the inaccurate measurement of the asset and recognition of the depreciation within the profit. It is possible that the management classify the asset together to justify a longer useful life, thereby artificially inflate the profit through the reduced depreciation charges. ये भी हो सकता है क्योंकि उनको वहां से प्रॉफिट मिल रहा है मैनेजमेंट को. नाउ कमिंग टू द इक्विजेशन, तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या क्या रिस्क हो सकता है सिग्निफिकेंटली. तो अगर हम चले तो एक तो पहले तो हमने ये बेंचमार्क फिक्स कर लिया कि हाँ जी भाई हमारा एक तो मटेरियलिटी को हम लोग को डिस्कस करना था, वो हमने मटेरियलिटी का डिस्कशन कर लिया और हमने मटेरियलिटी 5% पर रखा है क्योंकि हमारा गियरिंग रेशो रिस्क बढ़ रहा है, प्रॉफिट में प्रेशर बढ़ रहा है. तो पहले तो ये हो रहा है कि एक्सेप्शनल आइटम एंड अनयूजुअल मूवमेंट इन मार्जिन. तो एक्सेप्शनल आइटम्स है एंड अनयूजुअल मूवमेंट इन मार्जिन, अनयूजुअल मूवमेंट इन मार्जिन. तो ये एक चीज है, ये एक पॉइंट है जिसमें कहा गया कि एक्सेप्शनल आइटम के प्रॉफिट के ऊपर यानी एक्सेप्शनल आइटम अलाउ करने के पहले वाले प्रॉफिट पे मैनेजमेंट को ये बोनस मिलता है. तो वहां पे क्या हो सकता है कि बहुत सारे आइटम को एक्सेप्शनल में क्लासिफाई कर देंगे ताकि वो अपने इसको, लेकिन इसको करेक्ट करने के लिए उनको कंप्लीट ये एक्सेप्शनल आइटम में उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया इसका कंप्लीट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ताकि यूजर समझ सके. दूसरा है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू द एक्सेप्शनल आइटम एंड अनयूजुअल अनयूजुअल मूवमेंट इन मार्जिन. तो एक तो ये वाला पॉइंट था. दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि भाई हमने क्या किया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट in relation to the renovation and extension program. अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने यहाँ पे कैपिटलाइजेशन में कुछ कम बेसी कर सकते हैं क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है, तो हमें मिस कैलकुलेशन हो सकता है कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम उसको एसेट को ओवर द पीरियड लगा देंगे. फिर एक्विजिशन ऑफ लैडर कंपनी, एक्विजिशन ऑफ लैडर कंपनी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड एंड गुडविल. तो एक्विजिशन ऑफ लैडर कंपनी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड एंड गुडविल. बोला assuming that it is correct that ladder has company as a subsidiary, there is a significant risk of material misstatement relating to the accounting of acquisition and accounting of treatment of goodwill, non-controlling interest, asset and liability acquired through the IFRS, the business combination. All assets required assumed to be the business combination as measured at the acquisition's date fair value and we recognize separately for the goodwill and are recognized separately. There is a risk that not all required assets and assumed liability has been identified. There has not been measured at the appropriate fair value. The fair value exercise is very subjective. Increasing the risk of is very subjective. A fair value exercise is increasing the risk of misstatement and fact that the latter company is foreign subsidiary may mean that the identification of asset liability would be more complex. That any misstatement in the net as recognized will impact the goodwill, meaning that non-current asset would be will be over or understated. तो ये सारा चीज भी हो सकता है. उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ लैडर कंपनी. बोल रहा है कि information is not provided regarding the value of the ladder and the total assets and nor about the goodwill arising on the acquisition, but the cost of investment is material to the group. Ladder has been treated as a subsidiary in the नहीं पता लेड नहीं बोला हो सकता. Ladder company has been indicated as subsidiary in the consolidated statement and which would appear to be the correct treatment
given the group owns 65% of the company, which indicate the control. According to the IFRS in consolidation and investor control and investee, where the investor has the power over the investee, exposure and right to the variable in returns, and exposure or right of variable return from its involvement within the investee. The ability to use the power over the investee is affected the amount of investors' return. The risk is due to the government farmland owning 35%, which may be the some restriction on the group management exercising. For example, if under the regulation of farming, the shareholding 35% is enough to block decision, the preventing the group from the fairly controlling the operation. In this case, the consolidation would not be appropriate, leading to the misstatement of the consolidation as a whole. अच्छा, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था लीडिंग एंड पहला इक्विजिशन को लेके था कि हाँ इक्विजिशन एंड गुडविल का सही वैल्यू नहीं हुआ होगा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड एंड गुडविल fair value of net assets acquired and goodwill पहला तो ये दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा है हमारा क्लासिफिकेशंस को लेके ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है क्लासिफिकेशंस क्योंकि हमारा 65% होल्डिंग है तो IFRS 10 के हिसाब से तो हम IFRS 10 के हिसाब से तो कंसोलिडेट कर सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट 35%। तो अब फारलैंड गवर्नमेंट का क्या रूल है नहीं पता, फारलैंड गवर्नमेंट का रूल नहीं पता, तो यहाँ पे हो सकता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमारा हो सकता है। ठीक है, अब एक और है कि ladder company use the Farland National Accounting Standard. For the purpose of consolidation, ladder company financial statement must be prepared using the same accounting policy as the rest of the group. Comply with IFRS accounting a standard requirement. As such, there is a need to adjust the financial statement during the consolidation. It is an area of the high inherent and control risk due to the inexperience of the group management with ensuring the consistency of accounting policy across the company. There is a risk that the adjustment may not be complete and may not be appropriate, so leading to error in the group consolidation. तो ये सबसे बड़ा point हो सकता है and that is a very good point. Ladder company use of Farland National Accounting Standard. अकाउंट तो यहाँ पर चूंकि मैनेजमेंट जो है उसके पास उतनी एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग में मिस स्टेटमेंट हो सकता है। प्रोविजन ऑफ लीगल क्लेम अगेंस्ट द रेंज कंपनी, का प्रोविजंस में भी आपका मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है। प्रोविजंस फॉर लीगल क्लेम्स अगेंस्ट रेंज कंपनी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, the provision recognized is a material to the consolidated financial statement. The provisions recognized is material to the consolidated financial statement. The risk is that the liability may be understated and the profit overstated if not all claims have been recognized. In the provisions or remeasurement of the provision is not appropriate, the investigation into the excessive fees charged at the range is ongoing. Therefore, it is likely that the more claim may be, in addition, there is a fine of the penalty imposed by the financial service regulator, which is not recognized the provision against the understating the liability and overstating profit. So there is a further risk of inadequate disclosure of the notes of financial as a IAS 37. यहाँ पे एक IAS 37 यानी कि provision, contingent liability and contingency requires a disclosure including the brief descriptions of the nature, timing, uncertainty and assumptions
लिंक्डइन कौन चला रहा है? तो पहले चैट जीपीटी से अपना वो तो बनाओ। चैट जीपीटी आ गया, उसमें अपना रिक्वायरमेंट लिखो हिंदी इंग्लिश में। तो यहाँ पे ये हो सकता है क्योंकि हमें IS-37 पे कंप्लाई नहीं हुआ, ये भी मटेरियल स्टेटमेंट हो सकता है। नीचे लिखने का है ना, इन्वेंट्री इज मटेरियल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, क्या कहा थे मतलब हो गया, चलो कुछ नहीं, हम ओपन किया बस, हो गया। अब यहाँ पे तुम साइन अप कर लो अपना आईडी से। लिंक्डइन पे स्नैपचैट चल रहा था, मैं नहीं चलता लिंक्डइन। क्या इसको बंद करना? अच्छा, पैसा कम होता है। Inventory is a material to the financial statement. The group allow the IS to inventory by the measuring inventory at a lower cost or net real, but the risk of material statement is arise due to the judgment involved the measuring. क्वेश्चन तो भरा रहा हूँ, तुम कुछ भी अपना क्वेश्चन यहाँ लिखो, पहले तो अपना एक जाओ कॉपी बनाओ, जाके अच्छे से जाओ वहां से कोई रफ कॉपी बनाओ, ठीक है। उसके बाद सेल्स फ्रॉम द रिस्क दैट द सेल्स प्रमोशन व्हिच आर बीइंग due to the judgment involved the measuring and the value of due to the sales, the risk of the sale promotion which are being put in sales due to the price was with the competitor buy one get one would reduce the net realizable value of the produced line below the cost. This effect it would affect the system is not if effective system is not in place to determine whether where in this case of the adjust inventory valuation accordingly the inventory could be overstated in value. Given the incentive for the management buys discussed above, the management interest in inflate investments as they increase the operating cost and therefore the bonus to that now. तो यहाँ पे बहुत अच्छा बात हो रहा है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, चूंकि हम लोग बाय वन गेट वन ऑफर यहाँ पे दे रहे हैं, तो हमारा इन्वेंट्री का वैल्यू अगर मतलब IS-2 के हिसाब से, यानी IS-2 के हिसाब से अगर हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन अगर कॉस्ट और NRV अगर हमने अप्लाई किया, दोनों में जो सबसे छोटा होगा वो हम लेंगे। अगर यहाँ पर हम जब बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हैं, अगर हमने इन्वेंट्री को सही से एडजस्ट नहीं किया तो हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस एडजस्टमेंट मिस स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास रिस्क मटेरियल ऑफ रिस्क स्टेटमेंट होने का क्या मतलब है? पहला तो एक्सेप्शनल आइटम एंड अनयूजुअल मूवमेंट ऑफ मार्जिन, कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, एक्विजिशन ऑफ लैडर, fair value of net asset acquired in the good classifications and goodwill क्लासिफिकेशंस जो है वो हम IFRS 10 के हिसाब से उसको तो कंसोलिडेट करना चाहिए, बट चूंकि गवर्नमेंट आई है तो हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है हमारे पास लैडर कंपनी जो यूज ऑफ फाइल एंड नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जो कि एक प्रॉब्लम है। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम को लेकर प्रॉब्लम है IS-37 के हिसाब से। इन्वेंट्री IS-2 का भी एप्लीकेशन नहीं किया तो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। सो कंक्लूजन, the group
audit is considered as a relatively, अब यहाँ पे state the conclusion based upon the comment made in your answer. So the, the group audit is considered to be the relatively higher risk due to the numerous business risk and the risk of the material misstatement. तो दो रीजन से हमारा जो रिलेटिवली हाई होता है, पहला एक तो बिजनेस रिस्क की वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हिच हैज बीन आइडेंटिफाइड, द रिस्क हैज बीन प्रायोरिटाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड देयर लाइक्लीहुड। तो रिस्क को हम लोग मैग्नीट्यूड यानी उसका इम्पैक्ट और उसके लाइक्लीहुड के हिसाब से हम उसे ये कर दें। द इक्विजिशन क्लासिफिकेशन ऑफ लैडर शुड बी कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट, considered to be the most significant risk during the audit. Due to the nature of its being acquired during the year, the potential for the management bias in classification into subsidiaries in the goodwill. In addition to the treatment of the goodwill, the business risk identified from the acquisition due to its being first foreign subsidiary for the group, the subsidiary is not adopting the IFRS, so potential influence over the decision for company or by the foreign government make it an area where the additional audit work and even the use of local expertise be required. तो ये conclusion दे सकते हैं. In addition to the risk of ladders acquiring, the restriction of restructuring in addition to the risk of ladders company acquisition, the restructuring project be needed. Careful audit scrutiny is to ensure the completeness and accuracy of the accounting treatment, in particular which cost has been capitalized. Finally, the significance of risk of management bias in presentation of expenses in the statement of P&L requires the audit team to effectively challenge the proposed accounting presentation in the group financial statement. Now, therefore, the audit strategy and program must be carefully developed to reduce the overall audit risk to acceptance level wise, focusing on the significant issue. अब है प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स. प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द स्टोर इनहांस्ड प्रोग्राम. पहला in respect of the expenditure stored in Acca to develop an understanding regarding the programs and obtain the relevant supporting document including the capital expenditure forecast. पहला ये समझ लिया. दूसरा, discuss the management to form an understanding that progress made on the program by the year end, how many of them are now fully renovated and how many close for the event. The number of the store on this event has not yet commenced. Compare the cost incurred to date to the approved capital expenditure budgets to the program and discuss the significant variance with the appropriate employee, for example, the project manager. Arrange to physically inspect the several stores to confirm the existence of their renovations. Arrange a physically inspect several stores to confirm the existence of their renovations. For any store being renovated at this year end, obtain a stage of completion certificate from the building contract to allow the assessment of the cost capitalized. Perform the substantive analysis procedure by comparing the amount of capitalized in relation to the each store and discuss any unexplained anomalies with management to identify whether the appropriate amount has been capitalized or meets the criteria. Consider the asset rather than expense. Obtain a breakdown of the total cost incurred by the year end. For example, the age or the agree of the supporting documents, site acquisition cost, or the legal documentation, fixtures such as the shelving of the suppliers involved. Invoices evaluate the nature of expenditure, whether appropriate accounted as a capital or revenue. For appropriately capitalized cost, agreed amount is indicated as a non-current asset. For the labor cost, inquire the management for understanding the basis of account capitalized for the and the degree of the sample cost and agree a sample of cost like wages per hour to payroll record and time sheets. उसके बाद test the operating effectiveness of the management internal control over the classification cost between the capital and revenue by using the sample of invoices from the both classification and agree the nature of the cost. Review any relevant signed contract. Review any relevant signed contract from the building contractor, electrician, architect, and discuss any significant deviation from the amount
stated in the contract and the amount capitalized. उसके बाद लास्ट में हमारा एथिकल इश्यूज क्या होगा? सबसे पहले द ग्रुप इज बीइंग आस्क्ड स्टैनली एसोसिएट टू एडवाइस फॉर द इंटरनेशनल एक्सपेंशन. The group has asked Stanley Associate for the advice of his international expansion and also to perform the adjustment to Ladder's financial statement to align his accounting IFRS, and this raised the several ethical concerns issued to the firm. Well, first, providing the advice on the selection of the targeting companies and the financing and on the financing of the investment, the provision for non-audit services are in the investment are in provision of law, especially the Code of Finance Service, especially the corporate finance services, corporate finance to an audited entity. The ISBA International Code of Ethics of Business Professional Accountant state the provision of non-audit service likely to be give a rise to the threat of objectivity and independence. Objectivity and independence. In particular, familiarity, self-interest, and self-review and advocacy threats if possible. According to the codes, the factors are relevant in evaluating the level of such threats created by the providing the corporate finance to an audit client team include the degree of our subjectivity involved in determining the appropriate treatment for the outcomes or consequences of the corporate finance advised in the financial statement, the extent to which the outcomes of the financials will be directly affect the amount recorded, the outcomes of the corporate finance advice directly affect the amount recorded in the financial statement. The amounts are material to the financial statement. Therefore, whether the effectiveness of the corporate finance advice depend upon the partner particular accounting treatment or presentation. So, in providing the advice on the selection of the target company and non-financing arrangement, the main risk is the audit firm could be seen to be taking as the responsibility of management, assuming a management responsibility creates the familiarity threats because of the firms become too closely allied with the view and interest of the management. The code states that the audit firm shall not assume a management responsibility for an audit client. Providing the advice also create a self-interest threat due to the fees which will be payable to the advice provided, particularly due to the size of the fees which could influence Stanley Associate when performing the service. The fact that the fees of the service will amount to 75% of the audit fees indicate that the fees will be significant and the combination with the audit fees and the fees of any other service provided to the group, the actual perceived fees dependency would be created, meaning that the firms would be motivated to act in a way in which ensure the retention to the client. तो यहाँ पे एक थ्रेट हो सकता है, चार पांच थ्रेट है. पहला क्या क्या थ्रेट हो सकता है? सबसे पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी और कंप्रोमाइज हो सकता है. सबसे पहले तो यहाँ पे इन्वॉल्व द डिटरमाइनिंग आउटकम्स. तो several threats. First, non-audit services, especially the non likely to give rise to the trade objectivity and independence. ये दो चीज को राइज करेगा. सबसे पहले तो इनकी ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस को राइज कर लेगा. तो objectivity and independence, familiarity and self threat and self review and advocacy threats are possible. तो ये भी हो सकता है इसके अलावा. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा सवाल था जिसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स थे. 50 नंबर का सवाल था. रियली गुड क्वेश्चंस. अब हमारा ये सारे थ्रेड्स तो हमने देख लिया. अब ये बोल रहा है कि द सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स क्यों अराइज हो रहा है यहाँ पे. The self-claim arise when the auditing company and the auditing firm would be evaluating the risk of following the audit procedure pertaining
to the advice which had given and would be less likely to be highlight issue and challenge the assumptions. This aspect, this impacts and the quality of the audit performed advice on the finance in particular likely to lead to the no advocacy threats. The audit firm is seen to be promoting the interest of the audit client. For example, the potential provider of the finance, the firm is promoting and confirming the company's ability to fulfill the debt obligation. The audit firm also should consider whether safeguard could be used to reduce the threat of the acceptable. For example, the written acknowledgement from the management that they are responsible for the decision making regarding the planned international expansion and associate finance. So they have to take a written acknowledgement from the management कि ये सारा का सारा डिसीजन उनका ही रहेगा. The use of separate, the use of the separate team, the use of separate team of staff to provide the advice to work or the audit with the provider and other services could be avoid expressing an opinion on the approach and conclusion which is made by the audit team when they considering the accounting and reviewing and monitoring the situations by an independent auditor partners and the use of engagement quality review to provide the effective challenges to both the audit engagement partner and audit partner responsible for performing the other services, which is aware that the circumstance leading to a significant self-review threat. In if such safeguards are considered to reduce the threat to an appropriate level, then the advice could be provided. The advice could be provided. The matter should be discussed with the group audit committee, which should approve the provisions for the self for those non-audit services by the audit firm without further detail of the nature of the work which will be required. It is not possible to assess safeguarding available would be sufficient in this case. Now, adjustment to the financial in relation to the performing the adjustment of the ITNA, the code is the providing the accounting information to an audit client create a self-review threat. This threat arise because there should be an audit firm will perform the necessary adjustment which form part of the consideration consolidation. The audit team is likely to or likely to rely over rely on the work of their colleagues, not rigorously audit the adjustment. The code states that unless the services are of the routine or mechanical natures, they should not be provided. Given the complexity of adjusting financial statement from the national accounting standard to an IFRS, this is not a routine or mechanical work. The service should be and the service should not be provided. Recommendation: it is recommended that our firm does not offer the advice to the group in its planned extension services to the significance in planned expansion due to the significance of ethical threat to the independence and objectivity that could arise. It's really a very nice big question. Generally, workman self-review, self-interest, self-review, advocacy threat, safeguarding threat, briefing the formats. काफी मजे का क्वेश्चन.